हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय शो सक्सेस एसीपी। दिस इज उसामा अहमद और आज हमारे साथ एक बहुत ही वंडरफुल एंड आई कैन से दैट काइंड गेस्ट मौजूद हैं इंडिया से, अहमदाबाद से। और इस वक्त वो बेस करते हैं कनाडा, ओंटारियो, टोरंटो। सो मेरे गेस्ट हैं, वो डॉक्टर हैं होम्योपैथिक के, और कनाडा में इस वक्त वो मुकीम है, इस वक्त वो वहाँ रहते हैं। पीपीपी, डॉक्टर पीपीपी मौजूद हैं, प्रवीण। मैं बहुत ही आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपने कीमती शेड्यूल में से वक्त निकाला है इस इंटरव्यू के लिए। कैसे हैं आप? ठीक है? यस उसामा अहमद भाईजान, आई एम द हेवन अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का शुक्र है। आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। आप एक सेलिब्रिटी हैं, डॉक्टर पीपीपी आपका नाम है। तो मैं चाहूँगा कि आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाएं मेरी ऑडियंस को। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपको नहीं जानते। नो डाउट कि आपको बहुत सारे लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं रस्मन चाहूँगा कि आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाएं। श्योर, बहुत बहुत शुक्रिया उसामा अहमद भाईजान। हेलो, एमेन, आमीन, नमस्ते। आई एम डॉक्टर पीपीपी। I am the Celebrity Guru award-winning author of the book You Are the Celebrity. I'm the marathon man who ran only 17 plus full marathons by God's grace, alhamdulillah, and your blessings. I am the Himalayas Guru who's climbing the Everest, the Himalayas, by God's grace, alhamdulillah, and your blessings. If the Celebrity Guru can write, so can you. If the marathon man can run, can you. If the Himalayas Guru can climb, so can you. Life is a movie, you are the celebrity. Life is a celebration, you are the celebrity. Life is a marathon, you are the marathoner. Life is a book, you are the author. Life is a mountain, you are the mountaineer. I am 2+ times Canadian, 5+ times international, Guinness World Records, award-winning author of only not 5 but 10 plus books by God's grace, alhamdulillah, and your blessings. I am United Nations Peace Ambassador of the world by God's grace and your blessings. And I'm humbled, I'm honored, I'm privileged, I'm blessed, and I'm super excited to have myself with none other than unstoppable Usama, Mr. Usama Ahmed, all the way from Dil, Pakistan. Yes, sir. So nice of you, and you introduce yourself very well. So Shukriya. not for me, but everyone will like your introduction. So then I would like to ask you that where you born, where you grow up, and where you did your schooling. So please tell about this. Come again, please. What's the question, sir? Mr. PPP, I asked you that where you born, where you grow up, and where you did your schooling. Sure, that's a great question. हम दुनिया के बेहतरीन से कंट्री, हिंदुस्तान के बेहतरीन से प्रोविंस, राज्य गुजरात, जिसने दुनिया को महात्मा गांधी दिए, बहुत सारे प्राइम मिनिस्टर दिए, इंक्लूडिंग मोदी जी, एज वेल एज बहुत सारे सेलिब्रिटीज भी दिए। उसी गुजरात की छोटा सा गांव है जुल्लासन, जिसने दुनिया को नासा एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स दिया। उसी जुल्लासन की छोटी सी गली जिसका नाम है टेम्पल स्ट्रीट, महादेव वास, वहाँ हम almost 52 years ago पैदा हुए। This July 12 I'm going to be 52. But I am always say I'm 52 Canadian, 39 US, and only sweet 16 pound. Yes. So in my village there are like 100 plus temples, and the biggest temple of my village was made by my villagers as well as the non-resident Indian who are all over the world. And that was the Doloma temple. That was a Muslim goddess temple. Even though in the 1,000+ years history of my village, only Hindu people lived in my village. So spirituality was
from the childhood, my father taught me the lessons of spirituality, religion, especially also my brothers from, father, mother, brothers, grandfather, grandmother, everybody used to go to the temple, brothers, friends and everybody. So that's how relatives and everybody. So that's how started uh, the path of spirituality through Hindu religion. And then when I grown up to grade 10, I studied in my village as well as another village where my father used to study. My father used to do the job there where I study, which is Saltao. And also another village, my neighboring village over there also I did grade 8, 9, and 10. And my father also studied in the same school too. And the same principal, the one who taught my father, same teacher used to be as the principal when I was studying at grade 8, 9, and 10. And then grade 11 and 12, I got very good marks. So I went to the Ahmedabad in the hostel first time at age 15. I went to the hostel, and the college was Gujarat College. Over there, I studied grade 11 and 12. And after that, I got good marks, in grade 12. So I got, admission. I can become doctor, engineer, anything I can become, right? By God's grace and your blessings. And my father wanted me to become the doctor. So to live my father's dream, I sacrificed my childhood dream when I was in grade 2 or 3. My father gave pen, the slate, we used to write in the slate, like, made up of like mitte ki bani hui, black color ki hoti thi. Slate. So yeah, I remember those ancient times. So then my father gave me the container. On that container, there was a beautiful picture of an airplane and blue color airplane and blue color air hostess or pilot. So that was my first dream. I remember, grade 2 or 3 that हम दुनिया घुमाएंगे और लोगों को भी दुनिया घुमाएंगे, ठीक है ना? तो ये चलाएंगे, हम हवाई जहाज चलाएंगे. इसके बाद मैं early teenagers who are around 13, 14, 13, 14, and then I told my father, like, father, I'm going to become the, Indian guru, Indian priest. The world has never ever witnessed in the history in the past, and the world is never ever going to witness in the future. Same father who taught me, religion, spirituality. Same father said, "You are the lighthouse of our family." That means emotional blackmail, and I love my father. My father is not only my father, my godfather. So I sacrificed that dream too. And then I love mathematics since my childhood. To give you the example of mathematics, how much I love, during my medical college, my birthday was coming up. So I said, I know my birthday, July 12, year I know 1970. But I don't know which day did I born of the week, like, either Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, or Saturday. So then I started to research, and within like about 2 hours, I found out the formula. So according to the formula, not only I find out the day which I born, but I can find anybody, in the past, in the future, before Christ, AD, BC, doesn't matter. So yeah. And again, my father said, you're going to become the doctor. I want you to become a doctor. So then to live my father's dream, I went to the medical college. Now, I was living not my dream, I was living my father's dream. So I suffered a lot. Even though, like, when I went to the grade 11, 12 in the hostel, like about 40 kilometers close to my village in Ahmedabad, I suffered homesickness. So now during medical college, I went to the Surat. Surat is the beautiful city. It's a diamond city, like about 95% diamonds of the world are cut and polished in Surat. Also, Surti Khaman, Surti food is also very, very favorite. And Surti people are good in saying bad words, especially Gali, like here in foreigners, people use F word as a comma or as a full stop. Same thing like, in Surat, Surti people say Gali as like comma and full stop. It won't hurt. It's like, it's a part and parcel of the language, Surti language. So then over there, I suffered in very complex because of English. Even my family doctor took several years to came up with this, diagnosis.
And I was not living my dream, my father's dream, and homesickness. So all the three things get together. And I never failed up to grade 11, straight A students and everything. And now I started failing in medical college. Very first year, I passed my first year after fifth trial. Like on the fifth trial, I passed my first year of medicine, right? And big books, in English, man. I studied English subject was coming from grade 5 up to grade 12. But our English teacher used to, teach English in our mother tongue, which is Gujarati. Sorry to So, interrupt. yeah, Sorry to sure. interrupt. I want to ask you that the whole story that you are telling, is it doctor of MBBS or Yeah. is it homeopathy? Yeah, so in India, I studied MBBS. I put 8 years. Like generally, MBBS is like 4.5 years of MBBS. And then after that, you get like 1 year of rotation. So instead of 4.5 years, I took 8 years and I became the final year dropout. And then, so in, after that, also I came to Canada, and that was also my dream since my childhood that, uh, love of my life is going to find me. I'm not going to look for love of my life. Also must be the same last name. हमारे दिलरुबा होगी वो same last name Patel होनी चाहिए जो मेरा last name है. And nowadays Patel is the largest surname in the world, by the way. इसके बाद पटेल में there are subdivision, Kadwa Patel and Lewa Patel. So Lord Rama, Messenger Rama has two sons, Love and Kush. The generation of Lava Patel from Lahore, they known as the Leva Patel. And generation of Kush from Kasur, Kadwa Patel, they are known as the Kadwa Patel. So I'm Kadwa Patel, and then in Kadwa Patel also there are subdivision, 42, 84. So those days, like 42, Kadwa Patel supposed to get married into those 42 village, and the towns like that, So yeah, now it's a different story. So that was I am crystal clear, the love of my life, मेरी दिलरुबा हमारी होगी वो, 42 Kadwa Patel होगी. इसके बाद वो अमेरिका से होगी, ठीक है. तो बस ऊपर वाले ने मेरी सुनी when I was in great, I was in second year of medicine. तो जैसे काइट फ्लाइंग मेरा फेवरेट फेस्टिवल है और उस वक्त मैं इंडिया में कहीं भी होता हूँ मैं मेरे गांव काइट फ्लाइंग के लिए जाता हूँ राइट बिकॉज वो बचपन से ही याद है यार फादर के साथ अंकल के साथ ब्रदर्स के साथ दोस्तों के साथ वो मना हमारा मेरा जो घर था ना लाइक लोअर मिडिल क्लास फैमिली वाला बंदा हूँ मैं तो वो घर था मेन लेवल था वो भी मना वो भैंस का जो गोबर से वो एक तो मना बना था एक फ्लोर तो बना था वो भैंस के गोबर से बना था ठीक है वो चूल्हा होता था वो खाने के लिए वो भी वो भैंस के गोबर से बना हुआ था ठीक है तो मेरी ग्रैंड मदर मेरे ग्रैंड फादर वो भी वो बुलक कार्ट चलाते थे ठीक है मेरी मदर ने भी फार्म में बहुत कुछ काम किया अस्थमा था फिर भी मना बहुत कुछ पूरी जिंदगी उसमें दिला दी और एज 51 पे सोने गई थी 23 जनवरी 2001 को और about 2 days before the earthquake there was a earthquake in Gujarat on the 26th of January the Indian Republic Day of 2001 so 2 days before my mother went to go to sleep on 23rd January 2001 and next day didn't wake up in next day morning so in the sleep went to God rest in peace so yeah that was happened when I was in Canada I left yeah there was a story about so when I saw the wedding card on the wedding card written like okay my wife Usha from Canada so I went with my wedding card to my father, and I said, Father, there is a mistake. What is this CANADA? Yeah, it must be USA. Then my father told, son, Canada is the country and neighbor of USA. But तब तक प्यार कर चुके थे अपने दिलरुबा से and everything is fair in love and war. So then, yeah, that's how and then after getting married one more distraction like okay हम हमारे दिलरुबा के बाहों में कब पहुंच जाए कब कनाडा जाए so another distraction right so everything adds up and finally I became the final year dropout and came to Canada on 23rd July
and 1996. I got married on February 5th, 1994, and after two years and 4 months, 5 months, I was in Canada, and I've been to US 100 plus times already, and yes, and then I became the homeopathic doctor because now my father's dream became my dream. So I was challenging uh, God of death, like Yamraj, even though Yamraj, if you're coming हमारी जान लेने के लिए तो आप आओगे ना, तो आपको भी हम रोक देंगे जब तक हम यहाँ पे वो डॉक्टर ना बने. ठीक है, तो होम्योपैथी डॉक्टर तो मैं और मेरी बीबी दोनों बन गए यहाँ पे. इसके बाद मैं 20 साल के बाद मेरा पहला दिन था मेडिसिन में, सितंबर 5th 1988. तो उसके 20 साल के बाद वो मैं यहाँ पे वो फिर से वो प्रिपेयर कर रहा था मेडिसिन के लिए, बिकॉज आई गॉट एक्सेप्टेड फॉर कैरेबियन यूनिवर्सिटी. और कैरेबियन यूनिवर्सिटी वालों ने मेरे को एग्जाम्शन भी बहुत कुछ दिया था. तो जनरली $100,000 फीस होती है, तो उन्होंने बोला कि आपको 100,000 नहीं भरनी है, ओनली 8,000 के वो 3 इंस्टॉलमेंट करने हैं. और कैरेबियन वो बोनेर में भी वो जाने के 2.5 years जाने के सवाल नहीं है. इसके बाद वो 2 साल इन यूएस क्लिनिकल रोटेशंस होते हैं. दे सेड इंस्टेड ऑफ 2 years just you do 12 weeks 3 clinical rotation and that's it. So I was so excited. I was preparing for that, and in November of 2008, within one day I got hospitalized 2 times, in emergency, because I started pain around my heart, frequency was like out 7 out of 10, and around my brain like about 9 out of 10 kind of frequency pain, and I couldn't breathe. So even though it was like a snowy day in November in Canada, Toronto, I just opened the windows, to grasp the air, and my jaw got locked. I couldn't breathe, and then we called 911, and then they brought me to the emergency hospital in the emergency ward, and then about 7-8 hours staying in the stretcher, and my late mom was coming in my dream, during that stretcher, even like when those 911 paramedic was bringing out from my home for going to the hospital, I said, okay, last time let me see my son's face. My son was at that time born in 2003. So in 2008, about age 5. But they say you don't have even that much time. So, and so then doctor said, yeah, everything's fine. They did blood work and everything, electrocardiogram, heart, heart reading and everything, and they said looks fine. I went back on the same day around 2 p.m. also same situation happened again. I admitted to 911 called, and they said, gave me 2 options, like, would you love to go to your family doctor, or would you love to come with us like last time you came a couple of hours ago? I said, if I go to family doctor by myself, I know I'll be gone to the heaven on the way. So better you guys pick me up. So again, paramedic picked me up. Again, 7-8 hours on the stretcher, and finally my turn came, and doctor said, looks like anxiety attack to you. So we are going to give you the medication, which if God forbid, again it happens, then you can put it under your tongue. So same day around night time, before going to sleep, same situation happens, same symptoms and everything, same severity of the, symptoms. And again, at that time I did have, that sublingual medication. I took it, and then everything's okay. So after that, I decided, even though okay, somebody gives me for free degree, I'm okay. I did my best. I was challenging the death of God, and he came in one day 3 times to take my life, and still I'm in front of you. So again, by God's grace, alhamdulillah, I'm here. And then, so maybe after already I was there, right? And then during my medical college, I was writing my autobiography around the late teenagers, maybe around 19. And I was not thinking to write. I was writing my autobiography. मेरी जीवनी में लिख रहा था, और one of the holy book, epic book लिख रहा था, either रामायण, I believe रामायण और महाभारत था, दोनों में से one of that. And my father came to meet me in my hostel from my village, and with the expectation कि भाई ठाकुर खुश होगा, शाबाशी देगा. My father is like a military man.
like I look up to him, like that. So there was a gap, like not like buddy kind of relation, father-son relation. And so with that expectation, I told my father, like, Papa, I'm writing my autobiography, and here are some pages of this autobiography which I wrote already. Then my father looked at those pages, and after that said, son, that's nice, but तेरी जिंदगी तो ये ऐसी बना कि दुनिया तेरे बारे में लिखे. Like, son, that's nice, but why don't you make your life so much big? So world writes about you don't have to write. So I was waiting for like about 40 watt ka jhatka. तो मैंने 4 billion watt ka jhatka लगा. तो लेकिन उस वक्त बंद किया. And then about like 15 years ago, Mr. Raymond Aaron from Toronto, he came into my life. He was delivering the speech in front of like about 70,000 people. And he said, okay, I'm very successful. I've been to North Pole, less than 50 people in North Pole. I have 1,000 plus businesses, also one of that is like I help you to write your book. I created thousands plus authors all over the world. And then, slowly I attended his book writing programs, the same program about almost 2+ hours presentation, maybe I don't know 15 plus times, and finally one day I said, man, enough is enough, man. Here is my credit card, charge me, and help me out to become the author. That day was 15th of September 2013, and within 3.5 years, I was holding my book on 30th of April 2017. And that's how my book, being the author journey, started. Right now, I'm the author of 10 plus books, 2+ times Canadian, 5+ times international, Guinness World Records, award-winning author of 10 plus books. And I'm the marathon man who ran about 17 plus full marathons, and each marathon is like about 42 kilometers and 200 meters. So about 700 kilometers I finished marathon so far. In month of July last year, in 1 month, I finished 4 marathons. 1.5 marathon was same time, and after a couple of weeks, 2.5 marathons. So yeah. That's my little story. Sorry for take you a bit more time. Very wonderful story. It is very beautiful story. Everyone will happy to listen Sure. this. I want to ask you one thing that I understand. Sure. You join MBBS. You join a medical college for pursuing the MBBS degree, and you take 8 years, but which is just 4 years, 4 years long. But you take 8 years, and the last year you have dropped out. Is that true? That's true. Yes, absolutely. Yes. And right now, if I'm not wrong, you are a homeopathy doctor and doing clinic in Canada. So what was the experience in MBBS and homeopathy? What was the difference you not Yeah, what was the difference? Please tell. Yeah, that's a great question. When I was studying medicine, MBBS, Bachelor of Medicine, Bachelor of Surgery in Surat, Gujarat, India, some of the homeopathic students, they used to, live with us in our hostel, right? But over there, like we were walking on the cloud when, come on, guys, we are the top, man, homeopathy is like, itty bitty kind of thing, But then he said, God has a bigger plan, better plan, because whatever comes around, that goes around, whatever goes around, that comes around, right? So God put me here, in North America as a homeopathic doctor, right, But when I studied homeopathy, it's like a beautiful alternative medicine. It's a proven alternative medicine, found in Germany, and almost all over the world. By Wilmark Schwabe. What's that? By Wilmark Schwabe from Germany. Come again, sir? I said that it was founded by Dr. Wilmark Schwabe
from Germany. Dr. Hahnemann, yep, Okay, yeah. sure. So what was you telling? What's that? What was you telling? Sorry, I interrupt you. Sorry for that. We are having a subway is going on. So subway is like TTC, Toronto Transit Commission, about like 100+ years serving the community from all over the Canadians, as well as all over the visitors come to in Canada. Sorry for that. Yeah. So your question. What is the difference between both Okay. medical Okay. fields? Okay. So MBBS, MD, that's known as allopathy. Allo means opposite. Pathy means suffering or disease. Okay? Right? Yes. And homeopathy, homeo means similar. And pathy means suffering or disease. Right? To give you the idea, let's say you got the running, chalo zukam ho gaya, okay? Sardi zukam ho gaya, okay? So if you go to the medical doctor, MBBS doctor or MD doctor, specialist, they will give you to block their runny nose, ठीक है ना? रनी नोज आया तो ब्लॉक करने के लिए एंटी हिस्टामिनिक ऐसी वो मेडिसिन देगा, ठीक है? तो बिकॉज ऑफ दैट क्या होता है कि वो तो बंद तो हो जाएगा उस टाइम, वो नो, मगर क्या होगा नेक्स्ट टाइम में ना, वो सर्दी का वायरस है, वो कोरिजा वायरस है, वो वायरस जो माना स्ट्रांगली आएगा, तो सेम डोज माना इतना अफेक्ट नहीं करेगा. लेट्स से 200 mg का डोज दिया तो नेक्स्ट टाइम ना वो जुकाम होगा तो 200 mg से वो वो वायरस वो कैद में नहीं आएंगे, तो 300 mg और ऐसे ऐसे माना ज्यादा तो ऐसा होता है, ठीक है? अब जो होम्योपैथी जो होती है, अगेन everything has its own benefit, ठीक है ना? Right? I'm not putting anything down because पॉजिटिवली यूज करे तो सबका वो फायदा है, ठीक है? अच्छा, होम्योपैथी में क्या होता है, लेट्स से रनी नोज, ठीक है? तो हमारे पास ऐसी होम्योपैथिक रेमेडीज है जिसका जो जब वो फाइंड आउट की तो उसको जब किसी हेल्दी आदमी को देते हैं तो मतलब रनी नोज जैसा सिम्टम आते हैं, ठीक है ना? राइट? तो हमारे पास बंदा आया, क्लाइंट आया, पेशेंट आया, उसको रनी नोज है, हमारे पास होम्योपैथिक रेमेडी है जो उसका प्रोविजन कहता है, जो माना कि भाई वो रनी नोज जैसे सिम्टम देती है, तो सिमिलर हो गया ना? यहाँ पे पेशेंट है विद रनी नोज, यहाँ पे वो रेमेडी जो होम्योपैथिक रेमेडी है विद रनी नोज सिम्टम्स वाले. सो जब वो रेमेडी उसी पर्सन को देते हैं हम, देन दैट रेमेडी इज गोइंग टू इम्यून पावर बूस्ट करते हैं और that will take care of that one. तो वो रनिंग नोज का वो सिम्टम है वो निकाल देता है, जनरली जड़ से, मूल से निकाल देता है, रूट से निकाल देता है. तो ये बात होता है. But I understand from your discussion कि जो एलोपैथी मेडिसिन है वो डिप्रेस करती है उसको, जो वायरस है उसको डिप्रेस करती है, खत्म नहीं करता, लेकिन होम्योपैथी जड़ से खत्म करता है. दिस इज द मेन डिफरेंस दैट आई अंडरस्टैंड. Yeah, that's true, absolutely. दूसरा साइड इफेक्ट्स नहीं होती है, होम्योपैथी में साइड इफेक्ट्स नहीं होती है, ठीक है? But there is a big difference. I know that homeopathy is not homeopathy don't deal any emergency. Is that true? Okay. So सही बात है. लेट्स से आपको एक्सीडेंट हुआ, खून बूंद निकल रहा है, ये सब वो सब बड़ा सा हो गया, तो देन ऑफ कोर्स वी रिकमेंड कि भाई अब जो मना है कि 911 करे, ये सब करे, ठीक है ना? राइट? हाँ जी, हाँ जी. जो तो सबका वो प्रोज एंड कॉन्स है, ठीक है ना? एब्सोल्युटली. सो जो अच्छी बातें है दोनों की उठाए, ठीक है ना? ऐसे तो बहुत सारे वैसे तो अल्टरनेटिव मेडिसिन है, ठीक है ना? होम्योपैथी है, दूसरे भी आयुर्वेदिक है, ये सब वो सब आता है, कायरोप्रैक्टिस सब, ठीक है ना? तो वही है. The conclusion is every way it has its own value. Exactly. Value. So next, I want to ask you that you mentioned in your Facebook file that you are the president at Celebrity TV. So what is the Celebrity TV? Tell me about this. Yeah, that's a great question. One of my favorite one. Before I answer this question, let me add about homeopathy. Let's say, somebody lost the loved one. किसी का let's say, अब्बू का और अम्मी मन अल्लाह को प्यारे हो गए, ठीक है? let's say उनको 10 बेटियां है, ठीक है? तो किसी को मना लेट से डिप्रेशन हुआ बिकॉज अपना वो वालिद अल्लाह को प्यारे हो गए, किसी को मना आर्थराइटिस हुआ, पैर का वो आर्थराइटिस हुआ, चलो
किसी को मना हुआ कि भाई जो आता है वो जाता है यार, मुझे भी जाना है, मेरे अब्बू भी गए, चलो यार, ठीक है ना, तो उसको कुछ भी नहीं हुआ। तो ऐसे जैसे 10 लोगों को डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन हुआ, हालांकि मेन कॉजेशन क्या है, लॉस ऑफ लव्ड वंस, कि भाई उन्होंने अपना वो वो अबू अबू गुमा है, लॉस किया है, ठीक है ना, वो रेस्ट इन पीस चले गए हैं, ठीक है। तो बिकॉज ऑफ दैट, इवन तो 10 डिफरेंट डिफरेंट बीमारियां लोगों को है, उनके रिलेटिव को, उनके बच्चों को, मगर यहाँ पे मेन कॉजेशन क्या है, लॉस ऑफ लव्ड वंस। सो उनको होम्योपैथिक रेमेडी एक ही चाहिएगी, एक ही रेमेडी की जो वो टेक केयर करती है लॉस ऑफ लव्ड वंस के सिम्टम को, लॉस ऑफ लव्ड वन वाली जो सिचुएशन है उसको टेक केयर करती है, वही रेमेडी चाहिए। भले कोई भी सिचुएशन हो, उनका हेल्थ चैलेंज कोई भी हो, कि भाई डिप्रेशन हो, कि माना आर्थराइटिस हो, कि माना, ठीक है। तो ये बात है। नाउ डिफरेंट सिनारियो, लेट्स से 10 डिफरेंट कॉजेशंस है, ठीक है। डिप्रेशन हुआ है, बंदे को डिप्रेशन हुआ है, 10 लोगों को डिप्रेशन हुआ है, मगर उसका वो कॉजेशन है वो डिफरेंट डिफरेंट है। किसी को डिप्रेशन हुआ बिकॉज ऑफ फैमिली में चला आता है, किसी को डिप्रेशन हुआ कि उसको जॉब चली गई, किसी को डिप्रेशन हुआ बिकॉज लवर ने यार बीवी ने बोला कि बाय बाय, चलो यार, ठीक है, राइट। तो यहाँ पे कॉजेशन डिफरेंट डिफरेंट है, ठीक है, और सिचुएशन है कि डिप्रेशन है। तो इवन दो सबको डिप्रेशन है, मगर सबको माना डिफरेंट डिफरेंट कॉजेशन डिफरेंट है, तो डिफरेंट माना होम्योपैथिक रेमेडी चाहिए, ठीक है, समझ गए। यस। अच्छा, अब आते हैं वो सेलिब्रिटी वाला। अच्छा, when you came in the womb uterus of your own mom, there were several hundred million sperm were ready to fertilize the egg ovum of your own mom. Out of 700 millions, you, yes, you, Usama, you came as a celebrity. Then, Usama, you became of 1 cell, 2 cell, 4 cells, and so forth. Now look at you, Usama. You are the powerhouse of multi-trillion cells. Yes, you are the celebrity. ठीक है ना, ओनली हॉलीवुड बॉलीवुड वाले लॉलीवुड वाले ही सेलिब्रिटी नहीं है, आप भी सेलिब्रिटी हो, ठीक है। ये बात है, पहली बात। इसके बाद जब मैं बुक लिख रहा था तो मैंने बोला कि किस टॉपिक के बारे में लिखूं, ठीक है। तो मैंने बोला कि यार मेडिसिन में मेरा जी नहीं लग रहा था, पापा को कह नहीं सकता था, तो मैं सेलिब्रिटी बहुत सारे आते थे, वो जो मुंबई से नजदीक है, ठीक है ना, हमारा अबाउट 400 किलोमीटर। तो मैंने वो ड्रामा वामा के लिए आते थे, या वो कुछ नाइट्स के लिए आते थे, किसी रिच पर्सन का बर्थडे होता था तो वहाँ पे नाचने कूदने और डायलॉग करने के लिए। तो ये सब करते करते मैं उनकी ऑटोग्राफ फोटोग्राफ ये सब लेने लगा, सेलिब्रिटी, मैंने बॉलीवुड के सेलिब्रिटी के, पॉलिटिशियनों के, स्पिरिचुअल गुरु भी बहुत सारे मिलता रहता था चांस में, तो उनका भी ऑटोग्राफ, ठीक है। और स्पोर्ट्स पर्सन लाइक हो, क्रिकेटर्स हो, टेनिस प्लेयर्स हो, अदर टेनिस का तो हालांकि यहाँ पे कनाडा में आके किया, क्रिकेटर्स हो, अदर स्पोर्ट्स पर्सन हो, तो उनका ऑटोग्राफ फोटोग्राफ्स। उसमें सेल्फी वर्ड तो नहीं था, मगर हाँ जी, तो मेनली ऑटोग्राफ्स और वो करता था। कैमरा मेरा नहीं था उस वक्त, ठीक है ना। तो ये था, तो ऐसे ऐसे करते चलता गया, तो बहुत वो कलेक्शन होता गया, ठीक है। एंड इसके बाद तो मैंने बोला कि चलो बुक लिखते हैं, तो बस सेलिब्रिटी के बारे में लिख के और लोगों को रियलाइज कराया। क्या मैंने हजारों ये सब मिलने के बाद रियलाइज किया कि यार उनमें और हमें कोई फर्क नहीं होता है, राइट। कुछ क्वालिटीज है माना, सक्सेस क्वालिटीज, ठीक है ना, मगर वो भी अल्लाह के भगवान के बंदे हैं, वही जीसस के, जिसको भी मानते हैं उनके बंदे हैं, और हम भी उनके वाशिंदे हैं, तो वो कर सकते तो हम भी कर सकते हैं। तो सी दैट्स आवर बुक का टॉपिक है कि यू आर द सेलिब्रिटी, आप सेलिब्रिटी हो, ठीक है ना। नॉट ओनली अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान और इमरान खान जी ही But सेलिब्रिटी। but what is celebrity TV? You mentioned that हाँ celebrity जी। TV. तो इसके बाद क्या हुआ, रेहान अल्लाह वाला जिसे अबाउट लाइक 5 years ago हमारी वो उन्होंने वो पहचान लिया वो थ्रू फेसबुक। तो उन्होंने इसके बाद बहुत सारे वो पाकिस्तानी अम्मी अब्बू, बहने भाइयों और बच्चे बच्चियों से मुलाकात होने लगी, वो बोले कि इंटरव्यू करने लगे, देने लगे, ये सब वो सब। तो उस वक्त उन्होंने बी लाइव का इंट्रोड्यूस किया कि फेसबुक लाइव भी करते थे बहुत सारे वहां भी। इसके बाद बी लाइव करके वो जैसे अभी जो स्ट्रीम यार्ड है वो सब तो बी लाइव था, तो बी लाइव की मेंबरशिप ली मैंने। इसके बाद तो उसको मैंने नाम दिया सेलिब्रिटी, बिकॉज जो मेरा वो पहले बुक का पब्लिशर है रेमंड एरन, यू आर द सेलिब्रिटी के, वो ही इज द लाइक नंबर वन ब्रांडिंग करो, तो वो बोलते कि ब्रांडिंग आप करो, लाइक एक जो सेलिब्रिटी है जैसे हॉलीवुड बॉलीवुड वाले हैं, वो उन्होंने अपने आप को ब्रांड किया है, ठीक है ना। वरना
लेट्स से मैकडोनाल्ड बर्गर बनाता है, और हमारा वो पाकिस्तान वाला, इंडिया वाला, उनसे भी बढ़िया बर्गर बना सकता है, छोटी सी थैली वाला, हम खोली वाला, राइट। मगर मैकडोनाल्ड ने ब्रांड किया है कि भाई लाइक ब्रांडिंग, सो बिकॉज ऑफ दैट देयर आर लाइक 30,000 प्लस आउटलेट ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये सब वो सब, राइट। सो मैंने उस सेलिब्रिटी वर्ड को ब्रांड किया, सो लाइक मेरा ब्रांड बना गया द सेलिब्रिटी गुरु। दुनिया पे पहले कहे मेरे को, इससे पहले मैंने अपने आप को ही कहना शुरू किया कि हेलो, आई एम द सेलिब्रिटी, आई एम डॉक्टर पीपीपी, आई एम द सेलिब्रिटी गुरु ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। इसके बाद ओवर एंड ओवर एंड ओवर हैमरिंग करते करते इसके बाद वो बुक आई, ये सब वो सब, दुनिया भी स्लोली स्लोली, हाँ यार ये बंदा जैसा भी है, मैंने हाँ लगता है, तो वो भी सामने से कहने लगे। तो ऐसा है, दिस इज का सेलिब्रिटी। तो उसका मैंने प्लेटफॉर्म यूज किया बी लाइव का, तो नाम दिया सेलिब्रिटी टीवी, शो का नाम दिया यू आर द सेलिब्रिटी शो, बुक है यू आर द सेलिब्रिटी, ठीक है। तो ऐसे लोगों को भी हैव अ गुड डे नहीं कहता हूँ, मैं कहता हूँ कि यू आर द सेलिब्रिटी डे, ठीक है। जब है ना कोई स्ट्रेंजर को हाय भाई, तो हाय भी कभी हेलो सेलिब्रिटी कह देता हूँ, ठीक है ना। तो यही बात है, यही होता है। तो Okay. ऐसे ही आई हाईली एनकरेज यू, आप भी माना और हमारे सुनने वाले भी माना, ऐसे एक वर्ड जो आपको डिस्क्राइब करता हो, आपको माना पैशन हो कि रात दिन मरते दम तक माना उस वर्ड के लिए आप माना आए हो, कि आपका मिशन, पैशन, पर्पस, विजन जो आप ढूंढ डाले, एंड इसके बाद स्टार्ट लिविंग दैट वन, एंड ऊपर वाला जो मास्टर पीस मेकर है वो राइट मास्टर पीसेस आपके साथ जोड़ेगा, जिक्सो पजल वो पूरी हो जाएगी, ठीक है ना। तो दैट्स हाउ Okay. सेलिब्रिटी टीवी और सेलिब्रिटी का ये सब है। Sir, within 3 minutes, this will be end. But don't worry, I will send you another link. You have to join. Are you okay with this? Or you have any problem? Sure, why not? Okay, Sure. let's continue. Mr. PPP, you have experienced both medical professions, like MBBS and homeopathy, and you have experience of both fields. So, if anyone want to know that how he joined MBBS, you know better, there's a big big competition in this field and a huge merit in not in Pakistan or in India, in all over the world. So, what is your advice to the student that want to join medical field regarding MBBS? So, what will be your advice for Pakistan That's and a great India? question. हाँ जी, that's a great question. अच्छा, तो डॉक्टर बनना है तो किसको बनना है? आपको बनना है कि आपके पेरेंट्स को बनाना है, कि आपको किसी और ने कहा इसलिए आपको बनना है? तो पहले तो वो जाने कि भाई आपका डिजायर है कि नहीं, ठीक है ना। पेरेंट्स ने बोल दिया मगर आपको मना है वो फ्रॉग, वो 11-12 में फ्रॉग आता था एक फ्रॉग देख के आपको मना बेहोशी जैसा हो जाता है, तो अपने आप को पूछे कि ब्लड देख के मना आपको मना चक्कर आप आ जाते, तो पूछे आज, बिकॉज जो भी प्रोफेशन आप चूज करें डॉक्टरी का, तो मैं मरते दम तक माना लाइक आप माना इट्स अ ब्यूटीफुल प्रोफेशन, लोगों को जिंदगी देना, बहुत सारा रिस्पेक्ट भी मिलता है, मनी भी मिलते हैं, ठीक है। मगर वो 12-12, 15-15 घंटे देना भी पड़ता है, ठीक है ना। कभी कभी इमरजेंसी आती है और तो नॉन स्टॉप भी, सो ये बात है। सो यू हैव टू लव इट फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। तो आप दिल से डॉक्टर बनना चाहते हो, ये होना चाहिए, ठीक है। दूसरा है कि भाई स्टडी तो हार्ड एंड स्मार्ट करनी है, ठीक है ना। तीसरा है कि भाई डिस्ट्रैक्शन जो सोशल मीडिया है, कि दूसरे को डिस्ट्रैक्शन, बिकॉज उस एज होती है वो हैंकी पैंकी वाली, प्यार करने वाली, तो ये सब को भी मना वो स्टॉप करे तो अच्छा है। बिकॉज अगेन लाइक यू कैन नॉट राइड टू हॉर्सेस एट द सेम टाइम, ठीक है ना। प्यार के लिए भी, दिलरुबा के लिए भी और लवर के लिए भी आपको मना। So this is what it is, like you asked me the question, like what should we do, or what should somebody do who would love to become the MBBS doctor, or back home, India, Pakistan doctor, yeah, or anywhere in the world, in fact, right, because yeah. So this is the discipline, like have discipline. Also, like visit the doctors, when you're studying, right? But visit the doctors around your area and see, because then you familiarize with the lifestyle of being the doctor, like would you love to see yourself like 5 years from now or 10 years from now, what the doctors you are visiting now, right? So yeah, and
yeah, I wish you all the best. If you need more, more about that, sure, connect me, and definitely I'll do my best to Okay. share it with you. Okay. So, Mr. PPP, my next question is about your life. I'm seeing you are very regular and on social media. So, what आप कितने टाइम से इस जो है ना सोशल मीडिया पर एक्टिव नजर आ रहे हैं, मतलब कि आप इसको सीरियसली ले रहे हैं, लाइक यू आर 52 years old राइट नाउ दैट यू हैव टेल मी अबाउट, तो किस तरह मतलब कि सोशल मीडिया पर आपकी किस टाइम से एक्टिव है, लाइक यू आल्सो हैव टू लुक आफ्टर योर पेशेंट्स एंड लुक आफ्टर योर प्रोफेशनल लाइफ, how you manage your social media? Yeah, that's a great question. I am on Facebook since 2009, so about 13 years, right? Yes. Almost every social media, but I use Facebook prominently. And see, I treat my Facebook or social media as like multi trillion dollars Hollywood or Bollywood studio. If you are owning the Hollywood studio or Bollywood studio, and if you don't produce any drama, or if you don't produce soap opera, or if you don't produce any movies, whose fault it is, right? You know what I mean? This is what it is, right? Second thing is, I am practicing homeopathy part time, because again, like in Canada, homeopathy, like medicine is free. Like if you go to medical doctor, it's free, right? So homeopathy is not free in Canada. So if somebody homeopathy client come to us, they have to pay us, because government is not paying us to the homeopathy doctor, right? So which is very, very difficult, to 100% being dependent on your homeopathy practice. So that's why I work as a security officer too, right? So security officer take care of my, living, food, and everything. You know what I mean? So then in security, I do my duties, whatever required, but still, I make a time, so during that also, I keep in touch with my social media people, right? So it's working so far so good. Yeah, and also once whenever I have the appointments homeopathy, I make time for homeopathy clients too. Yeah. So this is how it works. Mr. PPP, I want to ask you one thing. Sorry, the discussion is going too long, but my questions have not ended yet. My question is that you join MBBS, but you don't want to join, but you still. My question is that how difficult was that for you? आई मीन के आपके टाइम पे भी मेरिट होगा, यानी मेरिट को अचीव करना उसको आपके लिए कितना मुश्किल साबित रहा कि आपको मतलब कि मेरिट को आपने अचीव किया और एमबीबीएस की में आपका एडमिशन हो गया, तो व्हाट वाज द एक्सपीरियंस, व्हाट वाज द मेरिट एट द टाइम, प्लीज टेल. Yeah, so to get the admission to get the marks to get the admission in medicine, because I was an academic person, right? As an academic student, I love study, and mana book warm था, ठीक है ना, book warm था, और मेरा वेपन वही था कि स्टडी वाज मेरा माय वेपन, ठीक है ना. खेलते भी थे, कूदते भी थे, ऐसा नहीं है, मगर हाँ कि मेरे को मालूम था कि स्टडी की वजह से मेरी दुल्हबा मेरे को मिलने वाली है, बिकॉज हाँ, 3 बेटे थे मेरे फादर के, और लोअर मिडिल क्लास फैमिली. फादर माना स्कूल में क्लर्क भी थे, हेड क्लर्क भी थे, और लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन की उसमें भी काम करते थे एज पॉलिसी, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के. तो हाँ, मगर फिर भी मालूम था कि वही एक वेपन है जो माना हमारे सपनों को पूरा करेगा. एंड पैशन भी हो गया था, ठीक है ना, कि भाई वो रिवॉर्ड अवार्ड मैंने पास अच्छी तरह से हो गया, तो मैंने पापा खुश हो गए, सब वो सब, तो ये भी था. और ग्रेड 10 में मैं आया तब से, और मेरे अंकल अंकल तो डॉक्टर कहने लगे थे, ठीक है ना. तो अभी तो रेस्ट इन पीस, अभी तो अल्लाह के पास है. तो हाँ, तो बस ऐसा था. तो मगर मेडिकल कॉलेज में मैं बहुत सफर हुआ, ठीक है ना. एक दफा तो मैंने सुसाइड करने के लिए चला गया था, ठीक है, नॉट लाइक थिंकिंग कि भी सुसाइड करेंगे, नहीं. आई वॉज रेडी टू
आई एक्ट करने के लिए भी पहुंच गया था कि यार तो सब ये जब मैं पूरा साल पढ़ता नहीं था, पढ़ने में मेरा जी नहीं लग रहा था, प्रोफेसर के लेक्चर माना इधर से उधर, इधर जाए तो दूसरे कान से निकल जाते थे। और वो मेरे साउथ एशियन प्रोफेसर होते थे तो माना उनका इंग्लिश तो माना फॉरेन सा इंग्लिश माना पढ़ ही नहीं पड़ता था। तो जब एग्जाम पे आए, पूरी ना साल जलसा करते थे। अंकल के वहां जाते थे, मेरे अंकल भी थे वहां सूरत में, इंजीनियर थे, तो उनके वहां जाते थे। उनके माना नेफ्यू, मेरे नेफ्यू निसीज होते थे उनके, बेटे बेटी एक थे, तो एक बेटा एक बेटी, तो उनको पढ़ाता था। अंकल के साथ वो इंजीनियरिंग साइड पे वो चला जाता था। तो वहाँ अंकल के वहां जाओ वीकेंड में, तो सैटरडे को भी बंक करने लगा था, सैटरडे संडे को। तो तब मेरा वो फुग्गा फूल जाता था। मेरे फादर का लेटर्स आए इंस्पिरेशन वाले, मोटिवेशन वाले, मेरा फुग्गा फूल जाता था। मेडिकल कॉलेज में आऊँ मंडे मॉर्निंग तो फिर से वो फुग्गा की हवा निकल जा रही थी। ठीक है, तो ऐसा ऐसा चलता था। एक दफा तो मेरे को मालूम है, मेरी एग्जाम आ रही थी और मैं खाने के लिए वो मैस में वो गए थे। तो मेरे को जब एग्जाम आए तो टिकता नहीं था खाना, मैंने वॉमिट निकल जाता था। तो मैस में ही मैं वो वॉश बेसिन के वहाँ वो वॉमिट निकल गई मेरे। तो मेरा सीनियर बोला, आर यू प्रेग्नेंट? ठीक है। तो हाँ जी यार, तो मेरा सीनियर था तो मैं कुछ बोला नहीं, मगर अभी भी वो डायलॉग अभी भी याद है। उस साल का मैं भी 90 था, तो अबाउट 32 साल जैसे हो गए, मगर फिर भी मैंने आई रिमेम्बर दैट है। ठीक है ना, तो ये बात है भाई। Okay. So winding up the discussion, Mr. PPP, Doctor of Homeopathy, and also failed Doctor of MBBS. I'm sorry if you मुन्ना भाई MBBS। get wrong. Mr. Pravin, I want to ask you that like practicing while a practicing doctor daily, you check patients, you deal with patients, with social media, with traveling from India to Canada, and whatever the life you have spent 52 years. Uh, there should be a lot of incidents that have a great impact on your life. I want to ask you that one incident, the one and only great incident that have a great impact on your life, कि जिसने आपकी जिंदगी पर एक गहरा असर डाला, that which should be a very changing incident. So what was that? Please tell me about that. ऐसे तो बहुत सारे लाइफ चेंजिंग इंसिडेंट आए, अबाउट 10 से भी ज्यादा दफा नियर डेथ सिचुएशन से ऊपर वाले ने बचाया है। एक इंसिडेंट है 2015 में, आफ्टर 21 इयर्स ऑफ आवर मैरिज, हम सेपरेट हुए। मेरी बीबी ने बोला कि आप सेपरेट रहो, एक साल में देखती हूँ कि भाई आपको वापस लाना है कि नहीं। इसके बाद हाँ जी, इसके बाद आई एम लिविंग लाइक अबाउट 1-2 मिनट्स क्लोज टू देयर, मैं 2 मिनट नजदीक ही रहता हूँ। मगर हाँ, तो ये इंसिडेंट्स ने मेरी लाइफ की दिशा बदल दी। ठीक है ना। और इसके बाद डिसाइड किया कि वसुधैव कुटुंबकम, पूरी दुनिया ही मेरा फैमिली है, नॉट ओनली एक बीबी और बच्चा ही मेरा फैमिली है। तो लोगों को मैं अच्छी ऑप्शन देता हूँ, आइदर वुड यू लव टू बिकम माय सोल सन और सोल डॉटर, सोल सिस्टर और सोल ब्रदर, और सोल फादर और सोल मदर, तो अच्छी ऑप्शन देता हूँ। ठीक है ना। और बस वही है। और इससे आई कैन गिव मोर टाइम टू द पीपल ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है ना, कि भाई तो ये सब है। हेयर भी वो Very ग्रे हो गए, ज्यादा ग्रे हो गए वो 2015 के बाद। आज तो लास्ट 7 साल में बहुत कुछ माना। okay. Okay, very wonderful advice, Mr. Praveen. I would like to exit this discussion with one question. That is not a question. आप जाते जाते हमारी ऑडियंस को, अपनी ऑडियंस को एक पैगाम देना चाहें कि जो आप चाहते हैं कि वो उस पर आपकी एडवाइस पर लोग अमल करें, लोग एक्ट करें. What is the advice? Then I will like to exit this discussion. Please tell. श्योर। एक छोटी सी स्टोरी से एंड करता हूँ। स्टोरी ऐसे है कि एक ग्रैंडसन था,
और एक ग्रैंडफादर थे। तो ग्रैंडसन ने वो स्पैरो चकली का बच्चा अपने हाथ में मुट्ठी में रखा और ग्रैंडफादर को बोलता है कि दादू दादू, हाँ ये बच्चा, ये चकली है वो बच्चा, वो जिंदा है कि मरा हुआ है, ठीक है ना? तो दादू ने बोला कि इट्स अप टू यू, ठीक है ना? तो हमारी लाइफ है ना, वो बच्चे की तरह है, स्पैरो के बच्चे की तरह है। वो बच्चा उसको ना दबा के वो मार भी सकता था और उसको माना ना फ्री कर देता, माना पूरी आसमान में वो उड़ भी सकता था। तो हमारी जिंदगी भी ऐसी है, कैसे हम हमें ट्रीट करनी है ना, वो मार डालने वाली अपने आप की जिंदगी को मार देनी है कि माना फ्री, जैसे अल्लाह ताला ने हमें बनाया है पूरी कायनात में कि भाई वहाँ पूरी कायनात हमारे लिए है, वैसे उसमें मना फ्री उड़ान भरनी है, ठीक है ना? आसमान का सीना चीर के मना निकल जाना है। सो वही है कि बिलीव इन योर वाइल्डेस्ट ड्रीम्स, डोंट लेट एनीबॉडी स्टील योर ड्रीम्स, जस्ट डू इट नाउ। इफ ट्रम्प कैन विन, so can you. If Trump can lose, so can you. If Modi can apologize, so can you. If Imran Khan can lose, so can you. You had the celebrity day, you had the celebrity life, you are the celebrity. Okay, Mr. PPP, thank you so much for your time. I really enjoyed your company. All the discussion I have with you is very valuable to me, and I really respect you. And Mr. PPP, that incidents are very much endless, and the discussion is endless. But the time is obligation of for all of us. That's why we have to limit our discussion. So thank you so much, Mr. Pravin, Dr. Pravin Patel, the celebrity guru, and all of you who are listening to us. Please value our discussion. This is for all of you, and I will like to have more collaboration with Mr. PPP, Pravin Patel, the celebrity group, in future on different topics. If he will like, then we will come back soon. So thank you so much. अपना और अपने जानवर को ख्याल रखें और जल्द मिलेंगे एक और नए इंटरव्यू के साथ, और तब तक हमें आप इजाजत दें। अल्लाह हाफिज़, फी ईमान अल्लाह। Allah Hafiz.